गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा ने बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 जो है वो पास कर दिया है। ये इस विंटर सेशन का पहला मेजर अचीवमेंट है। ठीक है, तो ये जो बिल है अमेंडमेंट बिल, ये कई तरह के जो बैंकिंग रिलेटेड लॉज हैं, चाहे वो आरबीआई एक्ट हो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो, एसबीआई एक्ट हो, इन सबको अमेंड कर रहा है। और इसमें क्या अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि जो डेफिनेशन है फोर्टनाइट की, जो अभी डेफिनेशन है कि सैटरडे जो होता है सेकंड फ्राइडे का, उसके बाद जो आता है उसको हम फोर्टनाइट कहते हैं। तब हम फोर्टनाइट कंप्लीट मानते हैं, पर उसको अब चेंज करके जो है वो फर्स्ट और 15th ऑफ ईच मंथ को जो है वो कहा जो है, या फिर 16th और लास्ट ऑफ द मंथ को जो है वो फोर्टनाइट की डेफिनेशन में डाला जा रहा है। इससे होगा क्या कि शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स इतना अपना कैश रिजर्व आरबीआई के साथ बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, उससे ये इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। और एग्जिस्टिंग रूल्स जो कोऑपरेटिव बैंक्स में है वो कहते हैं कि डायरेक्टर जो हैं वो 8 साल से ज़्यादा लगातार सर्व नहीं कर सकते, बट इसको टेन्योर को बढ़ाकर 10 साल किया जा रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स में। कोऑपरेटिव बैंक्स में ही एक डायरेक्टर अभी जो है वो दूसरे बैंक में बोर्ड में सर्व नहीं कर सकता, बट अब जो अमेंडमेंट करके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डायरेक्टर हैं उनको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में एज अ मेंबर सर्व करने के लिए अलाउ किया जा रहा है। फिर अगर एक कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देखना हो तो वो उसमें उसकी डेफिनेशन अभी है कि 5 लाख रुपए का आपने कम से कम इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, या फिर आपके 10% जो है वो पेड अप कैपिटल के आपके पास शेयर्स उसके अवेलेबल है, या विच एवर इज लोअर। उसको चेंज करके जो 5 लाख को बढ़ाकर 2 करोड़ किया जा रहा है। ठीक है, और करंट प्रोविजन कहते हैं सिंगल या जॉइंट डिपॉजिट होल्डर जो है वो सिर्फ एक ही नॉमिनी अभी तक नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अब जो है वो 4 नॉमिनी तक जो है वो आप न्यू प्रोविजन के बाद नॉमिनेट कर पाओगे। ठीक है, अनपेड जो या अनक्लेम्ड डिविडेंड्स होते हैं वो इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में चले जाते हैं अपने आप 7 साल बाद। अब इसमें जो है वो सिर्फ डिविडेंड ही नहीं बल्कि शेयर्स भी, बॉन्ड्स भी जो है वो जा सकेंगे 7 साल के बाद, उसकी अमाउंट जा सकेगी बेसिकली। और उसके बाद भी जो है अगर क्लेमेंट्स जो है वो रिट्रीव करना चाहते हैं शेयर्स या फंड्स को, तो आईपीएफ में से वो पैसा निकाल कर उन्हें वापस दिया जा सकता है। ठीक है, अभी तक जो ऑडिटर की जो रेम्यूनरेशन होती है आरबीआई डिसाइड करता है, लेकिन अब बैंक्स को जो है वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड करने दिया जाएगा कि वो कितनी रेम्यूनरेशन जो है वो ऑडिटर्स को देना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनुअल क्लाइमेट टॉक्स जो है बाकू अजरबैजान में फेल हो गई हैं। विद रिस्पेक्ट टू कि डेवलप्ड कंट्रीज़ कितना पैसा देंगी, वो सिर्फ $300 बिलियन एनुअली पर मानी है, जबकि डिमांड 1.3 ट्रिलियन की थी। तो इसको देखते हुए डेवलपिंग कंट्रीज़ ने, खासकर स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ने, ये मैटर को आईसीजे में उठा दिया है। अब आईसीजे पहले तुम समझते हैं, प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन है ये यूएन का। इसको 1945 में बनाया गया था। पीस पैलेस हेग में इसका हेडक्वार्टर है। इंग्लिश और फ्रेंच इनके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियन दे सकता है लीगल क्वेश्चंस पे, कोई अथॉरिटेटिव जजमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, 15 जजेस होते हैं, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। आईसीजी की जुरिस्डिक्शन सिर्फ तभी वैलिड होती है जब दोनों पार्टीज जो इसमें केस लेके जा रही हैं दोनों एग्री करें तो। ठीक है, जजमेंट जो है वो फाइनल होती है, टेक्निकली बाइंडिंग होती है पार्टीज के ऊपर, बट ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लॉ में आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ मैंडेट नहीं की जा सकती। ओके, तो हुआ क्या है कि वानुआतू जो कि एक स्मॉल पैसिफिक आइलैंड कंट्री है और राइजिंग सी लेवल से थ्रेटन्ड है, उसने जो है वो आईसीजी का एडवाइजरी ओपिनियन मांगा है क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस पर। और ये रेजोल्यूशन जो है वो जनरल असेंबली में 132 कंट्रीज़ ने और को स्पॉन्सर किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं आईसीजी से, कि क्या ऑब्लिगेशंस हैं कंट्रीज़ की इंटरनेशनल लॉ में कि वो क्लाइमेट सिस्टम को प्रोटेक्ट करें, और क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उन कंट्रीज़ के ऊपर जो उन ऑब्लिगेशंस को मीट करने में फेल हो जाती हैं। यूएनजीए के रेजोल्यूशन ने बेसिकली आईसीजे को क्लैरिफाई करने को कहा है क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस कंट्रीज़ की क्या हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इवैल्यूएटिंग इंडियाज़ पीएलआई स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएलआई स्कीम में हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ सेक्टर्स ने तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स जो है वो पीछे रह गए हैं। ठीक है, पीएलआई स्कीम आपको पता है 2020 में जब कोविड चल रहा था, तो इंडिया अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस को एनहेंस करने के लिए लेकर आया था और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए लेकर आया था, जिसमें कि हम चाहते हैं कि जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और इंडस्ट्रियल कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि एलिजिबल कंपनीज़ को हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं जितना वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को कंट्री में बढ़ाती रहती हैं, तो ठीक है। तो एक तरह से हम चाहते हैं कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स आएँ और मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो बढ़ती जाए, ठीक है। इसलिए इसको हम सब्सिडी स्कीम नहीं कह सकते, ओके ना। ये कोई पर्टिकुलर टाइप की सब्सिडी स्कीम नहीं कहा जा सकता इसको। तो ये देखने को मिला है कि टेक्सटाइल, सोलर मॉड्यूल, आईटी हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल्स, एडवांस्ड केमिकल सेल्स, स्पेशलिटी स्टील, ये जो सेक्टर्स हैं ये इसमें कम प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है, ठीक है। जबकि फूड प्रोसेसिंग, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हमें देखने को मिला इंक्रीज़ पीएलआई स्कीम में। तो ऑफ कोर्स चैलेंजेस क्या हैं, क्यों ये जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं इनमें क्यों ये स्कीम नहीं से काम कर रही सही? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को स्क्रैच से इन सेक्टर्स में बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत पैसा लग जाता है। और स्ट्रिंजेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा गया पीएलआई में इन पर्टिकुलर जो है सेक्टर्स के लिए। और जो इनकी कमीशनिंग का प्रोसेस है वो बहुत लंबा भी है, मतलब 1.5 से 3 साल लग जाता है। तो अभी तक इस स्कीम के जो है बेनिफिट्स वो आने उन्हें शुरू ही नहीं होंगे, अगर उन्होंने सेटअप भी किया होगा तो कम से कम 4-5 साल के आसपास बाद, मतलब 2025 के बाद या 2026-27 के बाद जाकर वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से होगी कि उनको वो पीएलआई के बेनिफिट्स मिले, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि पीएलआई स्कीम जो है वो लगभग 3 से 3.5 लाख करोड़ जो है इंडस्ट्रियल कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे कंट्री में ऑलरेडी कर चुकी है, ठीक है। और कहा जा रहा है आने वाले टाइम में कि आईटी हार्डवेयर जो है उसको एक अपग्रेडेड आउटले मिलेगा पीएलआई स्कीम में। और हमें ज़रूरत है कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दोबारा से रिवाइज़ करें और सपोर्ट को थोड़ा और बढ़ाएं उन सेक्टर्स में, खासकर जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट है, उन्होंने एक एयर क्वालिटी डैशबोर्ड बनाया है जिसमें कि रियल टाइम और फोरकास्टेड डेटा हमें मिलेगा एयर पोल्यूशन पर। तो ये ग्राउंड सेंसर डेटा को सैटेलाइट इमेजरी के साथ कंबाइन करेगा और PM 2.5 का जो लेवल है अक्रॉस द रीजन, चाहे वो लाहौर हो, न्यू दिल्ली हो, कोलकाता में हो, ये पूरा हमको शोकेस करेगा, ठीक है। यूज़र्स को इंटरेक्शन भी करने का इसमें एक तरह से देखने को मिल रहा है कि कैसे इंटरेक्शन हो रही है वेदर पैटर्न्स और एयर पोल्यूशन के सोर्सेज में। तो ये इंटीग्रेट करेगा एमिशन डेटा लोकल और रीजनल लेवल दोनों पर। तो ये एक मॉइड है क्या, ये इंटरगवर्नमेंटल नॉलेज और लर्निंग सेंटर है जो कि काम कर रहा है हिंदू कुश हिमालय रेंज के लोगों के बेनिफिट के लिए। 1983 में इसको बनाया गया था। मेंबर कंट्रीज इसकी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? काठमांडू में, ठीक है। तो इस पूरे रीजन को ये सर्व करता है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो डेलीगेशन है इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा लेड, ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का जो COP समिट हो रही है 16 रियाद में, वहाँ पर जाकर अपना अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो एक तरह से शोकेस करेगा। तो ये अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट क्या है? ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ये इनिशिएटिव जो है 5 किलोमीटर के बफर एरिया जो है अराउंड अरावली हिल बनाना चाहता है। ये गवर्नमेंट का विजन है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएं ताकि लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन को रोका जा सके। तो ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली को कवर करता है प्रोजेक्ट। और नेटिव स्पीशीज़ जो है ट्रीज़ के और श्रब्स के वो स्क्रब लैंड पर लगाए जा रहे हैं। तो एक तरह से फोकस इसका एग्रो फॉरेस्ट्री और पेस्चर डेवलपमेंट पर है, ठीक है। तो इससे इकोलॉजिकल हेल्थ बढ़ेगी, अच्छी होगी अरावली रेंज की, और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है थार डेजर्ट की वो रुकेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष जो है उन्होंने राज्यसभा को बताया कि ये स्कीम जो है वो कैसे काम कर रही है। तो ये स्कीम बेसिकली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, जिसमें कि आयुष मेडिसिन को इंडिया में रेगुलेट किया जा रहा है और एनहेंस की जा रही है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ और एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो इसमें जो है फैसिलिटेट किया जाएगा, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन दी जाएगी, स्ट्रेंथन किया जाएगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, और आयुष फार्मेसीज और ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज को स्ट्रेंथन और अपग्रेड करना, सपोर्ट देना डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स और एक्रेडिटेशन या सर्टिफिकेशन के लिए। ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। ये टॉपिक इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा ने रिसेंटली पास किया है ऑयल फील्ड्स अमेंडमेंट बिल 2024। ये अमेंड करता है 1948 का जो एक्ट है, ताकि बूस्ट किया जा सके इन्वेस्टमेंट ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में और प्रोडक्शन में। तो ये एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम को रेगुलेट करेगा ये बिल, और एक्सपैंड करेगा डेफिनेशन मिनरल ऑयल्स की, जिसके अंदर अब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों को डाल दिया गया है,
ठीक है। तो नेचुरली अकरिंग जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे कोल बेड, मिथेन या शेल ऑयल या शेल गैस, ये भी अब मिनरल ऑयल के कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन कौन सी चीज़ें नहीं है मिनरल ऑयल की कैटेगरी में? कोल, लिग्नाइट और हीलियम। तो इवन माइनिंग लीजेस को भी कैसे देना है वो भी ये कवर करता है। ये रिप्लेस कर रहा है माइनिंग लीज को पेट्रोलियम लीज के साथ, ताकि सिमिलर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो कवर की जा सके। और एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अलग अलग मैटर्स पर वो रूल बना सके, जैसे रेगुलेट करना ग्रांट ऑफ लीजेस को, मर्जर, टर्म्स, कंडीशन ऑफ लीजेस, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्रोविजंस थे लॉ में 1948 के जो थोड़े आर्काइक हो चुके हैं, तो उनको डीक्रिमिनलाइज कर रहा है कुछ प्रोविजंस को। और कुछ पेनल्टीज और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के साथ जो एडजुडिकेशन लेकर आ रहा है डिक्रिमिनलाइजेशन करके उसको, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Banking Laws Amendment Bill 2024. This topic is important for your economy and your governance section. So Lok Sabha has recently passed Banking Laws Bill 2024, which is basically the first legislative achievement of this year's winter session. Okay, so this act or this amendment act is amending several banking related laws, not just RBI Act, banking but Banking Regulation Act, State Bank of India Act, Banking Companies Act. Okay, so what are the key amendments and provisions of this banking laws bill? So this under this bill, first of all, we are changing the definition of the word fortnight, which is currently defined as the Saturday to the second following Friday. But now this new definition will say that fortnight is basically from the 1st to the 15th of each month, and then 16 to the last of the month. So this will bring more clarity, okay, in the definition of fortnight, and this will affect how both scheduled and non-scheduled banks maintain their cash reserves with RBI. So in terms of cooperative banks and the tenure of the directors of in cooperative banks, it is extending the tenure from 8 consecutive years to 10 consecutive years now. Okay, and currently a director of a central cooperative bank is not allowed to serve as any other member in any other bank, but now directors of central cooperative banks will also be able to serve on the board of a state cooperative bank. Okay, so the term substantial interest in a company is also being changed, which is currently basically if you have shares worth more than 5 lakh rupees or 10% of the company's paid up capital. Now this term this limit is being raised to 2 crore rupees. Currently a single or joint deposit holder can appoint just one nominee, but now it is being amended to allow up to 4 nominees. Okay, in case you have any unpaid or unclaimed dividends, it gets automatically transferred to the investor education and protection fund after 7 years. But now not just dividend, but also even if you have shares or bonds which are remained unclaimed, they will get transferred to IPEF, and it will basically allow claimants to retrieve also shares or funds which are transferred to IEPF. Okay, so currently RBI decides the auditors remuneration, but now banks will be empowered to independently decide the remuneration for their auditors. Okay, so the next topic is International Court of Justice. This topic is important for your international relations and also your environment section. So annual climate talks in Baku have failed with respect to how developed countries have just agreed on 300 billion dollars annually in climate finance, far below the demand of 1.3 trillion dollars based on the needs. Okay, so in response, what is happening is that the developing nations have uh, escalated this issue to ICJ now. Okay, so ICJ, what is that? So ICJ is basically the principal judicial organ of the UN, and it was established in 1945. Its seat of the court is the Peace Palace in The Hague, and English and French are the ICJ's official languages. So it gives advisory opinion on legal questions. It has 15 judges. Judges are eligible for re-election also. ICJ gets jurisdiction only if both parties who are coming to the ICJ agree to it or give consent to it, and judgment of ICJ is finally and technically binding. Why technically binding? Because in international law, you cannot force any state to obey the rules. Okay, so this is the case where Vanuatu, which is a small Pacific island nation, brought a
UN General Assembly resolution, which was supported by 132 countries. And now this resolution is asking the ICJ to give advisory opinion on climate obligations. So it is asking two major or critical questions: that what are the obligations of countries under international law to protect the climate system, and what will be the legal consequences for countries who are failing to meet these obligations. So this UNG resolution will request ICJ to clarify the climate obligations of countries. Okay. So the next topic is evaluating India's PLI scheme. This topic is important for your economy section. So while some sectors have shown encouraging results in the PLI scheme, other sectors are lagging behind. Why? First of all, we need to see what is PLI scheme. So PLI scheme was launched in 2020 during the COVID period to boost India's domestic manufacturing base and enhance the global supply chain contribution of India. Okay, so it covers 14 sectors as of now, and this scheme aims to create significant employment opportunities and drive industrial capital expenditure in India. Okay, so under this scheme, the eligible companies receive financial incentives for as much as they invest in manufacturing capabilities. So the objective is to attract maximum investments and scale rapidly the manufacturing base of India. So therefore, you cannot call it a technical, or you cannot technically call it, or you cannot call it a conventional subsidy scheme. Okay. So what is being observed here is that the sectors like textiles, solar modules, IT hardware, automobiles, advanced chemical cells, and specialty steel, they have seen relatively slow progress in creating jobs. So initial challenges stem from the need to build domestic manufacturing capabilities from scratch, because these sectors, they are time consuming sectors. So they need a lot of time before they can start producing or start manufacturing. Okay, so that's why it is appearing that these sectors are not performing well. Okay, but otherwise, even the food processing sector and mobile phone manufacturing sector have exceeded expectations. So what are the challenges in the above mentioned sectors? Of course, like I've told you earlier, that developing manufacturing industries from scratch in these sectors require a lot of time. So this is time consuming process. So because this scheme is not too old, it is just 4 years old. So it would take about 6 or 7 years for this scheme to show its results in these critical sectors. Okay, because the manufacturing will start only after a certain period of time. So sectors like mobile manufacturing have shown a tremendous ripple effect. So according to Chrysler, we are also seeing that PLI scheme could drive 3 to 3.5 lakh crore in industrial capital expenditure over its duration. So what is the way ahead? So our IT hardware scheme has recently received a upgraded outlay, and we're also going to revise the eligibility criteria and increase the support in underperforming sectors. Okay, so there is a need to fine tune policies to achieve the long term goals of for industrial growth, employment, and competitiveness. Okay. So the next topic is International Center for Integrated Mountain Development. This topic is important for your environment section. So International Center for Integrated Mountain Development has unveiled an air quality dashboard, which is a public platform offering real-time and forecasted data on air pollution. So this dashboard combines ground sensor data with satellite imagery, and this model reveals the alarming spread of PM 2.5 plumes across the region. And this model also allows the users to explore the interaction between the weather patterns and air pollution sources. It also integrates emissions data at both local and regional levels. Okay, so what is ICMOID? So it's an intergovernmental knowledge and learning center, a center working on behalf of the people of Hindu Kush Himalaya region. So it was formally established in 1983. It serves the region through information and knowledge generation, and its headquarters is in Kathmandu. So which are the member countries involved? Afghanistan, Bhutan, Bangladesh, China, India, Myanmar, Nepal, and Pakistan. Okay. So the next topic is Aravali Green Wall Project. This topic is important for your environment section. So India's delegation, which is led by Union Environment Minister, will participate in UN CCD. COP16 in Riyadh, and this delegation will showcase India's Aravali Green Wall Project, which is a major initiative to green the 5 kilometer buffer area around the Aravali Hills, and it is part of the government's vision to create green corridors across the country to combat land degradation and desertification. This project covers Haryana, Rajasthan, Gujarat, and Delhi, where basically the Aravali Hill landscape lie. Okay, the project involves planting native species of trees and shrubs on scrubland. So focus will be on agroforestry and pasture development. So this will improve the ecological health of Aravali range, and it will also limit or prevent the eastward expansion of the Thar Desert. Okay.
So the next topic is Ayush Aushadhi Gunavatta Evam Utpadan Samvardhan Yojana. This topic is important for your governance and social issues. So Union Minister for State of Ayush has informed the Rajya Sabha about this scheme, which is a central sector scheme, and it aims to regulate the Ayush medicines in India. So the aim is to enhance India's manufacturing capabilities and exports of traditional medicines and health promotion products under the initiative of Atmanirbhar Bharat. The aim is also to facilitate adequate infrastructure and technological upgradation and institutional activities in public and private sector for these Ayush drugs and materials, and also to strengthen regulatory frameworks at central and state level. Okay, so this will strengthen and upgrade the Ayush pharmacies and drug testing laboratories to achieve higher standards, and also to provide support for development of standards and accreditation certification of Ayush products in collaboration with other agencies. Okay. So the next topic is Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024. This topic is important for your economy and your governance section. So Rajya Sabha has recently passed the Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024 via voice vote. This bill will amend the 1948 Act so as to boost investment in oil and gas exploration and production. It will also regulate the exploration and extraction of natural gas and petroleum. The amended bill will also expand the definition of mineral oils to include petroleum and natural gas in it. The amended bill will also include any naturally occurring hydrocarbon, coal bed methane, and shale oil or gas in the category of mineral oils. But this bill clarifies that mineral oils will not include coal, lignite, or helium. Okay, it will also provide for mining leases, and it will this bill will replace the mining lease with the petroleum lease to cover a similar set of activities. However, existing mining leases which have been granted under the old law will continue to be valid. Okay, this new bill will also empower the central government to make rules on several matters like regulating the grant of leases, merger terms, and conditions of leases. And it is also going to decriminalize some of the provisions which were originally part of the 1948 law, and it will introduce instead the penalties or adjudication by an adjudicating authority or appeal as against the order of the adjudication authority. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.